So, okay, good morning to all. So today class is the chopper control of separately excited DC motor. And last class is already I have discussed that the different types of chopper, basic principles and choppers operation, and different types means class A, class B, first quadrant, two quadrant, like that. So last classes, those who are absent, watch that video is available in YouTube. So today, actually, I will discuss the chopper control for separately excited DC motor. And now, already in the last means rectifier control, like that phase control rectifier. Already we have developed that like a firing angle control alpha, and you have to control their pulse, voltage, and speed, like that. And similarly, the equations are derived. So in this case also for the chopper, so here also the motoring, generating, dynamic braking, like that control. So one by one, I will discuss here. First, motoring control, and also you know that the chopper, that is the chopper control of separately excited DC motor, means basically the chopper means DC converter here. So variable DC voltage from what? Fixed DC voltage. So actually, so many devices are used for the chopper, like a self-commutated device like a MOSFET, power transistor, IGBT, that is the insulated gate bipolar junction transistor, also GTO, that is gate turn off thyristors, and also IGCT, that is insulated gate C means commutated thyristors. These are the preferred also thyristors for the building chopper. चॉपर्स को बनाने में हम लोग ये सब जो है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का जनरली यूज करते हैं. ओके, सो अभी जो हम लोग पढ़ेंगे सिंपली ट्रांजिस्टर का जो है पावर ट्रांजिस्टर्स का हम लोग यूज करके चॉपर का कंस्ट्रक्शंस करेंगे, चॉपर का जो सर्किट्स को हम लोग बनाएंगे. नाउ अकॉर्डिंग टू दैट वी जस्ट फर्स्ट वन, दैट इज द मोटरिंग कंट्रोल. सो द टॉपिक इज चॉपर कंट्रोल ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर. एंड लास्ट क्लासेस में मैंने डिटेल आप लोग को बताया था, दैट इज द ड्यूटी रेशियो क्या होता है. ठीक है, कैसे हम लोग चॉपर का टर्न ऑन टर्न ऑफ जो भी है, जो मैंने आप लोग को बताया था ए बी चॉपर के बारे में, सारी चीज के बारे में. तो ठीक है, अभी हम लोग जो पढ़ेंगे चॉपर कंट्रोल ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर फॉर द मोटरिंग कंट्रोल ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड मोटर्स के लिए चॉप मोटरिंग कंट्रोल. सो फर्स्ट यू नो द बेसिक सर्किट कॉन्फ़िगरेशंस and their output waveforms, simple equations, okay, and their relation with the what? Speed. So first, the circuit diagram. The circuit diagram, simple. Just I am drawing one by one the circuit diagram. See here. This is one of the diode connected here. Now here transistors used for the chopper. You know the transistor circuit symbol, emitter base collector. This is the transistor. Now here the separately excited motor. So motor is just represented in their equivalent circuit, simple RLE load, like that. Okay, so this is the chopper control of separately excited DC motor. Here the voltage source, simple plus minus. Now this is the transistor. Now here TR, and this is the diode, mass about freewheeling diode DF. Now this is the output voltage across these, that is the VA. Now this is the circuit of the motor, that is the motor circuit configurations motor. And now you know that this is the RA, this is the LA, and this is the plus minus, this is the E. Okay, back EMF. Now current IA. So this is the circuit configuration. See here, simple circuit configuration
for the motoring control operation. For what? This is the motoring control operation. So here, this is the transistor chopper control separately excited motor. This is what? This is, write down here. This is a transistor chopper controlled separately excited motor drive. So here the transistor is operated just like a periodically. Means you know that the time, total time T, that is the turn on time, that is the turn off time. Turn on type, turn off type. So now I'm just drawing the here waveform first. Then I will explain one by one. First I am drawing the waveform here. See. Simple waveform. You know that. Turn on and off time period. Now during this interval, current waveform also. This is 0, this is the T on, now this is the T, this is the axis is omega T. Now current, this is IA1, now this is IA2, so current is during this 0 to T on, current is increases IA1 to IA2. Now this is T on to T time, current IA2 to this I1 decreases. Now I will explain one by one. Just first I am drawing the circuit and waveform here. So this is IA, simple IA. Okay. So see here, this is the circuit diagram. First one, this figure. This is the transistor chopper control for separately excited motor. Now this is the output waveforms. Now this is the VA. This is the VA, output voltage. Okay. So now see here, waveform. See here, voltage VA and IA means this is the armature current. Okay. VA means what? Motor terminal voltage. I'm writing here. VA, that is motor terminal voltage. Motor terminal voltage. And what? IA. IA, that is armature current. Armature current. So here, now the first thing is that during the on period of the transistor, during the on period of the transistor means 0T, that is T on. So in this case, during this interval, the motor terminal voltage is V. The motor terminal voltage, is V. Now, so what is the operation and what is the equation? Simple equation. See here. Simply here the RA, LA and E. And now the voltage across, that is the V during this interval. So okay, so now the interval 0 to T on, 0 to T on. So here, now this is the motor equivalent circuit RA, LA and E. Now this is the voltage. So now this interval, so operation is like that, simple. See here. Internet unstable. That is what? RA
Now drop is IA current. So IA and also inductor across that is LA DIA by DT, LDI by DT, you know that, and plus E is equal to what? That is the voltage V. Which interval? 0 T say T on. T on. This is equation number 1. Suppose that. Okay. So in this interval, armature current increases from IA1 to IA2. See here, in this interval, during this interval, 0 to see here, 0 to T on, this waveform, see the waveform, 0 to T on, this interval, 0 to T on. In this interval, what happened? So in this interval, that is the armature current increases from what? IA1 to IA2. And this interval, 0 to T1, this interval is called duty interval. Here the motor is connected to the source because the voltage is V na. So in this interval, this motor is connected to the source during this interval. So this interval is called a duty interval. This interval is called what interval? This interval, this time period, this interval is called duty interval. Duty interval. Okay. So take a screenshot of this. Okay. Just wait. Now I am sharing new whiteboard. Okay. So see here. So again, now the time, that is the when the time t is equal to t on, then what will happen? Next time, that is at t is equal to t on. When time will be t on, then what will happen? Then in this interval, the transistor is turned off. TR is turned off. Turned off. Then what will happen? When transistor will turn off, then what will happen? The current, just circuit, I am drawing the circuit again because just a bit. This is diode. This is transistor. Circuit is like that, okay. This is motor. Now this transistor, suppose this transistor is turned off. This transistor is turned off, TR. Then what will happen? The current is free will through this diode only. This free will. This is the motor. When this transistor is turned off, then what will happen? The motor current just free will through the diode. And motor terminal voltage, that is 0 during this interval, means which interval? T on to T, this one. That is T on, this is T, this is T. Okay, so simply we can write here the motor current free wheels through diode DF, and the motor terminal voltage is 0. Voltage is 0 during this interval, means T on T to T during this interval 0. So this interval is known what? Motor during this interval is known what?
freewheeling interval. This interval is called simple motor operation. Motor operation during this interval is called freewheeling interval. Freewheeling interval. So what is the equations again here? That is RAIA plus LA DIA by dt and plus E is equal to, but zero here, voltage is zero, this interval, T on T to T. So in this case, what will happen? The motor current in this interval decreases. Motor current decreases. Motor current decreases means IA2 to IA1. This is IA1. Now this is IA2. So in this interval, the motor current decreases IA2 to IA1. So you know that what is the duty ratio? What is duty ratio of the chopper? All of you know that. What is the duty ratio of the chopper? The basic duty ratio. You know that the duty ratio. What do you mean by duty ratio? So see here the duty ratio. Ratio of duty interval to the chopper period. You know that this one. Ratio of duty interval T on to chopper period T is called duty ratio. Duty ratio or duty cycle del. Okay, then del is equal to what? Simple duty interval is T on by T. T on by T. Okay, so you know that the average voltage. So what is the average voltage here? Means terminal voltage. So VA is equal to 1 by total time, and time 0 to T on, that is V and dt from this waveform. This is V. Okay, so T on. So here T on means V, just V को बाहर कर देना है, V and dt means T on and by T. So T on by T is what? Simple duty ratio. So del and V. So VA is equal to del V. यानी कि VA is equal to del V. Yeah. So simply we see that by controlling this duty cycle, we just control this terminal voltage of the motor. By controlling this duty ratio or duty cycle, we simply control this terminal voltage of the motor. So again, you know that the basic equations already in the last classes, means you know that equation, speed omega m is equal to V by K minus RA by K squared T. I think so all of you just remember that equations. Okay. My voice is clear now? Because network is unstable. Jatin Jha, my voice is clear now? Now my voice is clear or not? Jatin? Clear, sir. Clear, okay. Just wait. So what is the armature current? You know that the motor equation, V is equal to
So you just find out now this one VA is equal to del V. Okay. VA is equal to del V. So the basic equations, you know that from that basic equation, क्या था? V is equal to what? V is equal to E plus IARA. This one na for the motor. Okay. So from this IA is equal to V minus E by RA. Okay, but V is nothing, simply this is the del V. So IA is equal to del V minus E by RA. So this is the one relation for armature current. Okay, now what is the speed relation? What is the speed? So this one also know that, we know that this one also. All of you, I think this is very familiar. VA by K minus RA by K square T. मैंने ये चीज जो है कि बहुत पहले ड्राइव किया हूँ, बहुत बार इसको, ठीक है। सो सिंपली हम लोग VA की जगह में यहाँ पर फॉर दी चॉपर कंट्रोल क्या कर सकते हैं, यहाँ पर दैट इज द ड्यूटी साइकिल सोर्स वोल्टेज, दैट इज द K minus RA by K square and now T. Okay. So see here, this is the simply motoring control by using this chopper. This chopper means that circuit. So by simply controlling the duty cycle, we can control the speed for the motoring control of the speed. This is the motoring control. So similarly again, we can also for the regenerative braking, but the configurations will be different. Circuit configurations will be different. The positions of the transistor will be different, and the diode positions will be different. क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में जो था बताया था चॉपर्स के बारे में कि स्विच, जो चॉपर का स्विच का पोजीशन को चेंज करने से ही हम लोगों को जो करंट का नेगेटिव या पॉजिटिव जो मिलना रहता है वो जस्ट कॉन्फ़िगरेशन, और कॉन्फ़िगरेशन मींस स्विच का पोजीशन। तो स्विच का पोजीशंस को हम लोग चेंज करने से ही हम लोग का डिफरेंट जो है कि कॉन्फ़िगरेशंस हम लोग को मिलेगा। तो सिमिलरली अगेन हियर सी द नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन, regenerative braking. So all of you know that regenerating, but REGENERATIV. Okay, regenerative braking. So what is the circuit configurations? What is the circuit configuration here? So see all of you, the configuration. This is the one of the voltage source. This is the capacitor. One capacitor is just across the source. This is the diode. This is the transistor, NPN transistor. Now again the motor equivalent circuit. Okay. So this is the motor. Motor, that is RALAE plus minus. This is the voltage VA. Now this is the transistor TR. Now this is the diode D. Now this is the capacitor. This is the plus minus. This is the voltage V. Okay. So this is the regenerative braking of separately excited motor by chopper control. This is the configuration. Configurations को याद करना पड़ेगा क्योंकि ये सब कॉन्फ़िगरेशंस को अपने मन से नहीं बना सकते हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी जो है कि एक्सपेरिमेंटल ऑलरेडी डेवलप कर चुका है। रीजेनेरेटिव ब्रेकिंग के लिए पोजीशन जो है स्विच का यही है, बस हम लोग को समझना है कॉन्सेप्ट को कि रीजेनेरेटिव ब्रेकिंग का ऑपरेशन ये कैसे हो रहा है।
कौन सा टाइम इंटरवल में कौन सा ऑफ करने पर क्या करंट होगा और क्या वोल्टेज होगा। सो वेव फॉर्म को भी मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूं। सी हियर वेव फॉर्म, जस्ट वेट 1 minute। This is the VA, T on, T, omega T, IA2, IA1. So this is the configuration for the regenerative braking, and now this is the waveform. So just we understand that how this is operated, how this control operation like that. Simple diode here, transistor here, capacitor here. So this is the chopper for the regenerating braking operation. This is the chopper for what? Chopper for regenerative braking. Regenerative braking operation. So transistor, see here, the transistor, when the you know that the transistor operated with this time interval T1 to T like that. Okay, and now this is the waveform. This is the motor terminal voltage VA, armature current IA. For the, this is the continuous conduction mode. Okay, so now for the suppose here one thing, that just wait, C capacitor RALAE. Okay. So what will happen here? Simply when transistor is turned off, then what will happen? Transistor is turned off, then current just flow through this diode to source. Now this transistor suppose off, then what will happen here? This current is flowed load to source. Okay. When this transistor is off, turned off, then armature current flow this direction. Okay. And now this current is reduces to IA2 to IA1 current. Okay, this one IA2 to just गलत लिखा गया क्या यहाँ पर, IA1 होगा ये IA2. Okay, so 1 minute, just wait, I'm just taking the response of attendance. अभिजीत, okay, जतीन, okay, ज्योति कुमारी present, काजल कुमारी, Yes, sir. ज्योति कुमारी। ओके, ज्योति काजल, ओके, कुंदन कुमार, Yes, sir. ओके, and अकरम, Yes, sir. शादाब, तालिब अंसारी, Yes, sir. रवि कुमार, Yes, sir. रवि कुमार बहुत ही कम एब्सेंट, बहुत ज्यादा एब्सेंट रहते हो, ठीक है। सचिन कुमार, सरोज, सचिन, सरोज, शिल्पी, Yes, sir. ओके, ठीक है। अटेंडेंस को इम्प्रूव करने का कोशिश करो, जिसका भी एब्सेंट हो रहा है। ज्यादा सदाब सर नहीं बोल पाए। हाँ ठीक है, हम समझ गए, ठीक है, ओके। सो ठीक है, इसका ऑपरेशन को हम लोग समझ लेते हैं तुरंत। तो यहाँ पर यदि हम लोग ऑफ कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ऑन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, देख लो, कुछ नहीं है, सिंपल इस कॉन्सेप्ट को भी समझ सकते हो। नाउ हियर सपोज ट्रांजिस्टर को यदि हम लोग ऑफ करते हैं, यदि ये ट्रांजिस्टर सामने में देख रहे हो, यदि ऑफ हो जाता है तो ऑफ होने पर ये करंट क्या करेगा, ये लोड मोटर है, मोटर से इधर हम लोग का करंट जाएगा। अंडरस्टैंडिंग है कुछ, देखो ना, सिंपल करंट इधर ही जाएगा ना, क्योंकि हम लोग इस ट्रांजिस्टर को ऑफ कर देते हैं, तो ऑफ करने पर यह करंट लोड टू सोर्स की तरफ जा रहा है। यही तो हो रहा, कुछ तो नहीं दिख रहा, ठीक है। So here simply when transistor is turned off,
मान लिख सकते हैं कि when transistor is turned off, then what will happen? Armature current, शॉर्ट में लिखते हैं इसको, armature current flow through, कहां से होकर के, डायोड डी सोर्स बी थ्रू डी एंड वी, एंड करंट हम लोग का रिड्यूस कर जाएगा IA टू IA1, okay, and the reduces from current, and current reduces from IA2 to IA1, IA2 to I1. So in this time interval, what will happen? That is the energy. That is the energy supplied by machine is fed to the source. Basic concept means generating operation. In this case, what will happen? Energy supplied by machine. Simply we can see that the energy supplied by machine is what? Fed to source. Machine is fed to what? Source बैक हम लोग जा रहा है. सो जीरो से लेकर के जो टी ऑन, कुछ गलत हो रहा है क्या? ठीक है, IA2 ठीक है. सो ड्यूरिंग दिस इंटरवल हम लोग का क्या हो रहा है? एनर्जी क्या हो रहा है? स्टोर हो रहा है. मतलब क्या बोल सकते हैं? एनर्जी स्टोरेज इंटरवल. ठीक है. एक्चुअली हो क्या रहा है हम लोग यहाँ पर? रिजेनरेटिंग मतलब क्या समझ रहे हैं? हम लोग का जो एनर्जी हो रहा है बैक टू सोर्स, हम लोग का लोड से सोर्स की ओर जा रही है ना. बैक टू सोर्स. सो द इंटरवल 0 t on is called energy storage interval, and t on t to t the duty interval. सो डेल के बारे में तो हम लोग ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं. व्हाट इज डेल? डेल इज व्हाट? ड्यूटी इंटरवल टू टी, टोटल टाइम. तो यहाँ पर ड्यूटी इंटरवल हम लोग का क्या हो रहा है? टोटल टी से टी ऑन को माइनस करेंगे तभी जाके हम लोग का ड्यूटी इंटरवल निकल रहा है. टी ऑन से टी, ये वाला टाइम का पीरियड. ओके, टाइम इज ओके. नेक्स्ट ज्वाइन करो. ठीक है, नेक्स्ट ज्वाइन करो. टाइम लिमिट खत्म. ज्वाइन अगेन ऑल ऑफ यू. ज्वाइन अगेन. हाँ, ओके. तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ड्यूटी इंटरवल और डेल. तो डेल को हम लोगों ने क्या डिफाइन किया था? व्हाट इज डेल? दैट इज द ड्यूटी साइकिल, आल्सो कॉल्ड ड्यूटी इंटरवल. तो दिस इज द डेल इज ड्यूटी इंटरवल बाय टी. यही हम लोग पढ़े हैं, ड्यूटी इंटरवल बाय टोटल टाइम. तो यहाँ का ड्यूटी इंटरवल ये वाला है, ये वाला पीरियड, मतलब टी माइनस टी ऑन डिवाइडेड बाय टी. ओके. Now what is the terminal voltage? That is 1 by t. तो ये जो t इसका हो जाएगा लिमिट t on से t एंड v dt. तो ये जो मैं करूंगा तो ये भी सेम ही चीज आएगा, डेल v. सॉल्व करके देखो, t minus t on by t आएगा, डेल v. सो va is equal to डेल v. सो अगेन सिंपल, यू नो दैट इज द I. में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, I is equal to यहाँ पर I माइनस डेल v हो जाएगा जनरेटिंग में. ठीक है, आ रहे ये क्वेश्चन से एक क्वेश्चन आएगा हम लोग का. नाउ यदि हम लोग बात करेंगे स्पीड का, सो स्पीड इज इक्वल टू, यदि फॉर्मूला पता होगा तो फिर सेम चीज है, VA बाय के स्क्वायर था और RA बाय के स्क्वायर इंटू टी, सेम. ओके. सो नाउ डेल V बाय के माइनस
RA by K square, that is T. So now in similar way, in this case also, by controlling the duty ratio, duty cycle, we can just control the motor. But here the case is the regenerative braking. So this is the simple circuit diagram. This is the waveforms, and last that circuit diagram. So one by one, just we have to build a concept for that circuit. सर्किट जो है फिक्स है, रीजनरेटिंग ब्रेकिंग के लिए जो सर्किट बताया गया उसी सर्किट को ही बनाना है, ठीक है। तुम अपने से उसमें कुछ मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। ऑलरेडी हम लोगों के पास जो है कि उसका एक्सप्लेनेशन है बुक में, ऑलरेडी डेवलप है, उसी को करना है, ठीक है। तुम उसको नया डिजाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये जो है कि हम लोगों ने क्या देखा कि मोटरिंग कंट्रोल और रीजनरेटिंग ब्रेकिंग, दो केस को हम लोगों ने यहाँ पर समझा, और दोनों का सर्किट कॉन्फ़िगरेशंस को हम लोगों ने समझा, और जो स्पीड एक्सप्रेशंस लेकर के जो करंट का एक्सप्रेशन हम लोगों ने ड्राइव किया हो, तो दोनों के केस के लिए मोटरिंग कंट्रोल और रीजनरेटिंग ब्रेकिंग। तो ये हम लोग का फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑपरेशन जो हम लोग पढ़ रहे थे, मतलब वन क्वाड्रेंट, नॉट फर्स्ट क्वाड्रेंट, वन क्वाड्रेंट पढ़ रहे थे। और मैंने बताया था जैसे कि लास्ट क्लासेस में यदि हम लोग कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करते हैं और टू क्वाड्रेंट ऑपरेशन, मतलब या तो फर्स्ट और सेकंड में भी हो सकता है, फर्स्ट और फोर्थ में भी हो सकता है। तो उसके लिए सर्किट कॉन्फ़िगरेशन में मैंने बताया था कि दो चॉपर को जब हम लोग आपस में उस टाइप से कॉन्फ़िगर करेंगे तो हम लोग का क्या बनता है, वो सिंपल टू क्वाड्रेंट चॉपर। क्या बनता है? टू क्वाड्रेंट चॉपर, जस्ट टू क्वाड्रेंट चॉपर। ओके, सो दो टॉपिक हम लोग कंप्लीट हुआ अभी, मोटरिंग कंट्रोल और रीजेनरेटिव ब्रेकिंग। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं।